So good morning student. Today we are going to see how to find the range of any function. आज हम लोग किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं. तो रेंज फाइंड करने के लिए हमको कुछ रूल्स और कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते. वो स्टेप्स मैंने बोर्ड पे लिखे, आप अच्छे से इसको देख लो. हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, पुट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. देन सेकेंड स्टेप, एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y. सेकेंड स्टेप रहेगा आपका, एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y. देन सी थर्ड स्टेप, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. फाइंड ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. जैसे हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं, सिमिलरली हमको स्टेप नंबर 3 में y के वैल्यूज़ फाइंड करना है. एंड स्टेप नंबर 3, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 4, एलिमिनेट वैल्यूज़ बाय लुकिंग द डेफिनेशन और द गिवन फंक्शन. अब आप क्या करोगे, y के वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लोगे स्टेप नंबर 3 से, लेकिन आपको गिवन फंक्शन को देखना है. गिवन फंक्शन को देख के उसका जो डेफिनेशन है वहाँ से आपको जो वैल्यूज़ एलिमिनेट करनी है वो वैल्यूज़ आपको वहाँ से एलिमिनेट करनी पड़ती है, और वो डिपेंड करता है आपके गिवन फंक्शन पे. सो ओके स्टूडेंट, ये है किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड करने का वर्किंग रूल. सो कितने स्टेप्स है काउंट कर लो, 1, 2, 3 एंड 4. अगर आप ये 4 स्टेप्स कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप किसी भी फंक्शन का रेंज इन 5 सेकेंड फाइंड कर लोगे. 5 सेकेंड, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 5 सेकेंड में आप काउंट करोगे. लेकिन आपको उसके लिए ये 5 स्टेप्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट, चलो हम लोग देखते हैं कि ये 5 स्टेप से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. Now see the examples. Example number 1, find the range. Find range of f where y is equal to under root 4 minus x square. 4 minus x square. Now before that, don't forget to like and subscribe my channel and share it. सबसे पहले आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और इसको शेयर करना है बच्चों. सो इसी के साथ हम लोग हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप इस फंक्शन का रेंज फाइंड करोगे. तो रेंज को आप डिनोट करते हो आर ऑफ एफ से, और आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है, आपको इसकी रेंज निकालना है. सो फॉलो द वर्किंग रूल. स्टेप नंबर 1 से पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये है हमारा स्टेप नंबर 1. नाउ स्टेप नंबर 2 से एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y. अब आपको क्या करना है, x को y में एक्सप्रेस करना है. x को y में एक्सप्रेस करना है. अब आप x को y में एक्सप्रेस कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट का साइन है. तो यहाँ आपको x चाहिए, x एज ए फंक्शन ऑफ y. सो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लोगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus x square. Therefore, from this we write minus x square equals to y square minus 4, or we write x square equals to 4 minus y square. ये है आपका स्टेप नंबर 2. देखो आपने क्या किया है, x को ना इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दिया है. तो ये आपका स्टेप नंबर 2 आ गया. एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y. क्लियरली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y. y के आपको सारे रियल वैल्यूज़, पॉसिबल रियल वैल्यूज़ फाइंड करने हैं. अब वो फाइंड कैसे करोगे आप, सिंस यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है
ये एक्स स्क्वायर जो है, ये जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. सो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, therefore x square is always greater equals to 0, therefore we write 4 minus y square is also greater equals to 0. From this we can say that 2 minus y, 2 plus y is greater equals to 0. Now apply VV curve. To apply the VV curve, we have to convert this y into positive. अब इसको क्या करोगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन लोगे, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दोगे. तो डायरेक्टली वी राइट y माइनस 2 y plus 2 less or equals to 0, less or equals to 0. Now apply VV curve. So here we have 2 minus 2 and 2, minus 2 and 2. So here we take plus minus plus. Now here we have to consider negative solution, less or equal to, less or equal to. Here we have to consider negative solution. So here we have to take a negative solution. So what we have, here we write 0. We have to consider negative solution. Now observe student one thing. Now see your given function. This is your given function, and we know that y equals to under root 4 minus x square, and under root 4 minus x square is positive quantity, is a positive quantity. So here y is a positive, so we consider only positive values. So in this case we write range of f is equal to close 0 to infinity, close 0 to close to, this one, close. Why 0 to 2? Since y is positive, स्क्वायर रूट क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू कंसिडर करोगे, पॉजिटिव वैल्यू क्या कर लोगे, कंसिडर. तो इस केस में इस फंक्शन का जो रेंज रहेगा ये क्लोज 0 to 2 रहेगा. टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट सी सेकेंड एग्जाम्पल. See second example. In this example, we have to find a domain and range. Find domain and range. In second example, we have to find domain and range. So follow the first step. Put y equals to f of x equals to under root x minus 1. Now express. First we find the domain, and we know that y equals to under root x minus 1. Now apply point number 2. Point number 2 say the expression, square root of any expression is always positive. So we write x minus 1 is greater equals to 0. Therefore x is always greater equals to 1. X is always greater equals to 1. So from this we can write the domain of f equals to close 1 to infinity. Close 1 to infinity. This is a domain. Now next we have to find the range. For range we follow the first step. Put y equals to and for range we put y equals to f of x, number 2, y equals to f of x under root x minus 1. Again we take square on both the sides, square on both the sides, so we get y square equals to
x minus 1. So from this we can say that x equals to y square plus 1 for all y belongs to R. Now see, here also we have the y is square root function and it is always positive. So in this case we write the range is equal to close 0 to infinity. Close 0 to infinity. Okay student, this is all about the range of the function. Tomorrow we will see some more example. Till then, bye.